strategies, principles, and we were talking about NSQF, qualifications, gnosis, right? And this program is a well-blended program of your domain training as well as portfolio training. In the portfolio training, we have tried to rebrush your teaching, learning, pedagogy, educational psychology, learning processes, and in the same sequence to complete that. Today we have evaluative strategies and learning resources. So can anyone help me? Can anyone tell me what is assessment? आप इधर से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्लियर. So can you tell me what is assessment? What do you mean by assessment? Checking. What do you mean by assessment? बच्चों ने कितना सीखा है सर ये जांच करना assessment. But I am interacting with the teachers. My concern is not now student. Okay. My concern is teacher. So teacher is delivering, and after delivery, evaluative strategies or evaluation or assessment can perform two purposes. The first one is what you shared, what student could learn. Second is which is primary for you, that what student could learn, that is primary for the institution as well as for the students. But for you, how much effective my teaching was, Yes. what happened after my teaching, whether I could impart, whether I could transfer that knowledge or skill to the student or not. If I could not, it means your teaching strategy, your evaluative strategy is not effective. So what will tell you whether your teaching strategy is appropriate or not? Whether your pedagogical methods adopted for transferring the knowledge, the skill, the behavioral modification is appropriate or not. For that, you should have an appropriate evaluative or assessment strategy, right? So starting with the very first one is the assessment. So what is assessment? Anyone can stand up and help me in understanding. I have given you the definition. So anyone can stand up and help me in understanding that. आज कुछ learning by doing करेंगे, participative learning करेंगे. So anyone can help me? What is written there on the board? And you have to start from here only. The systematic collection. It is the systematic collection and analysis of information. Systematic collection. Systematic collection of what? Information. And then analysis of information. To improve student learning. Yes. Your job is not that whether student has learned or not. As a result of your teaching, then whatever kind of evaluative strategies you used, and that is to test whether learning has happened or not. Simply talking, it is for bringing the learning outcome. There are two concepts: learning objective and learning outcome. What is difference? Learning objective is prior to the teaching. In the beginning of teaching, you will decide what are your objectives. Learning outcome, whether those outcomes could be achieved or not. If outcomes have not been achieved, what does it mean? Your teaching process was a futile exercise. Or what you told on that day, no change has happened in the behavior. No change has happened in the understanding. Knowledge is related to explanation and understanding. Skill is related to doing, practicing, and attitude is related to the modification, change in behavior. So to test that, the process of testing that, process of collecting information related to that, and then analyzing it, whether your teaching is appropriate or not. So in your case, the evaluative strategies are to tune your teaching process. So are we doing that? कभी हमने इस तरह से सोचा है कि for what I am conducting the test, for what I am conducting the examination, for what I am conducting the practical, for what I am conducting a skill test? And is there any relationship
between my teaching and whatever result. वो एक वीडियो आजकल आपने देखी होगी, very good video. One Gujarati woman is going to the school because she has been called by the school teacher that your daughter is not performing well, and she is rebuking and she is giving a number of warnings to the mother, and mother is listening very patiently. And then she told her that I am a dabbe wali, I am supplying dabbas to the number of people, and my job is to supply dabba, to provide food to the people and then earn money, and then I am paying the fee. And you know what is your job? Your job is to teach my daughter. If she is not performing good, this is not my fault. If I would have not been able to provide dabbas to those who are my clients, then I had been the defaulter. Here, who is, if by the she is not bringing, this is your fault. So next time you do not call me, rather talk to yourself why she could not perform good. So the basic objective of your assessment is this one, whether your teaching is effective or not. But most of the time we are pretty relaxed. Whatever we have delivered, whether it was relevant to the topic or not, you have delivered, student have accepted it or not, we do not pay attention. So today I'm going to sensitize all of you what is the relationship between your teaching and evaluative strategies. And if you will ensure, by the way, if you will ensure that your teaching is wonderful, what does it mean? आपको learning test करने की जरूरत है क्या? वो तो अपने आप ही हो जाएगी, फिर उसको बताने की जरूरत थोड़ी रहेगी. And one thing I want to tell you, on that day, all you gave me the standing ovation and all that, and I was standing like this. There was reason behind that. I could not know whether whatever I shared, that was imparted or not. If I am delivering something, yes, it may be good, but really, is it good for you or not? And how we can test that? At least everyone should give me one bullet point. Sir, on that day, you shared that was very good. No. Sir, you shared that, and I was not aware about that fact. This was really appealing for me. I have taken it, and now I will go back and I will practice it in my classroom. Only then my teaching learning is effective. Otherwise, it is a futile exercise. Again, right? So is it clear what is assessment? Yes. In perspective of teachers. Next time, अगर बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं ना, तो विचार करना इस पे विचार करना. And it is not the students responsible for that. And yes, everywhere stuff is more or less एक ही जैसा है, right? Now coming to another point. By students assessment, teachers are able to institutionalize effective teaching choices and revise ineffective ones. On the first day itself, I told you that there can be certain set of behaviors which are very effective and appropriate for making the effective teaching. And there will be certain kind of behaviors which are not appropriate, or there are certain kind of pedagogical methods which are appropriate for teaching the different type of learning materials, right? If we are not adopting them, then the appropriate learning will not happen. And if appropriate learning will not happen, then in the assessment, that thing will reflect. Is it or not? So this is second. Then coming to the next, assessment enables instructors to determine the matrix of measurement. Can you tell me what is matrix of measurement? कभी वास्ता पड़ा है इस चीज से? मैडम बंद करना पड़ेगा ये. बंद करना पड़ेगा. सर, एक रिक्वेस्ट है. थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में बात कीजिए. वो ब्रैकेट वाली बात नहीं है, इंग्लिश में कुछ ब्रैकेट है. But so matrix of measurement. What is matrix of measurement? Can you tell me? क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर का मुझे पता है कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं. बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि यस किसको कितना आता है, मैंने अच्छा पढ़ा है. उसकी टेस्टिंग के लिए क्या इवैल्यूएटिव स्ट्रेटजीज की मैट्रिक्स बनेगी? क्या क्या होना चाहिए उसमें? कैसे टेस्ट करेंगे?
उसके पैरामीटर, फिर उनका इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन में भी डायमेंशंस क्या क्या लेंगे आप, क्या क्या रूब्रिक्स लेंगे, क्या क्या रूब्रिक्स लेंगे आप, बायोलॉजी के डायमेंशंस क्या, पैरामीटर क्या, एक साइड में वो आ जाएंगे, राइट। मैट्रिक्स का मीन्स वन साइड पैरामीटर्स, अदर साइड evaluative rubrics. Have you prepared that? Have you ever checked that? Have you ever given attention? Suppose you are from the computer side, then in that case parameter will be totally different. Yes, sir. If you are from mathematics side, the parameter will be different. If you want to go for intelligence test of the student, what could be the parameter? If you want to test the parameter of the capability or competency of intelligence of a student, what are different parameters? If you want to declare someone whether the person is intelligent or not, so what you will measure? What you will measure? Their IQ level, logical thinking. IQ is, it is quotient of intelligence, but first we need to test the intelligence. Na? So what we will test in the intelligence? By giving certain assignment. What assignment? And that is related to the subject or something else. Is it related? Intelligence, I am talking about general intelligence. It is not subject specific. Subject का मैंने बोला biology में the parameter will be different. Mathematics parameter will be different. Hindi parameter will be different. Communication parameter will be different. Similarly, if I want to ask you, let us check what should be the parameter if you want to check the leadership ability of the student. If you want to, होनी चाहिए ना. First will be the communication skills. Communication skill. Then the language. Now we are talking about leadership or what? Leadership. Or intelligence. No, पहले leadership. intelligence लिखते हैं. Intelligence. Okay. So what parameter should be tested? So how बताइए. much concept is उधर clear भी to बहुत that सारे person? बैठे हैं. Understanding में क्या? level of understanding. If you want to test the intelligence, what parameters you will test? So concept clearance कितनी है उसको firstly will check. सर वैसे इंटेलिजेंट डेफिनेशन तो ये हुआ कि जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज कर देता है वो इंटेलिजेंट है. डेफिनेशन तो ये हुआ ना. मैं तो पूछ ही नहीं रहा डेफिनेशन. पैरामीटर क्या है? So You want to declare whether a person is intelligent or not, and this is possible with the help of, if you are taking a patient to the hospital and you want to declare whether patient is suffering from disease or not, then doctor will test the patient for certain parameter, and after testing those, then doctor will declare. No, number of times when politicians are arrested, they will declare that they are suffering from heart disease, they are suffering from the other organ disease. And then that person will be taken to the hospital. In the hospital, a team, a board of doctors will test them for certain parameters. And if really there is any problem, they will declare, yes, there is heart problem and person should be shifted to the hospital. If there is no problem, then they will declare. Similarly, if you want to test the intelligence, then what parameters? Knowledge is really very comprehensive. What kind of knowledge? What kind of knowledge? Subjectivity test, sir. The concept clearance. IQ. Sir जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके कंसेप्ट का क्लियरेंस. और कोशिश करो. Number 1 is reasoning. Number 2 is the numerical ability. Number 3 is the language ability. Number 4 is the spatial ability. Number 5 is creativity. Then it will depend upon for what purpose you want to test the intelligence. Suppose you want to test the intelligence of a scientist. Suppose you want to test the intelligence of an engineer. You want to test the intelligence of a doctor. Yes, of course, everywhere there is need of reasoning. Agar reasoning ki baat kare, then your general knowledge also, then your general awareness also. So all these are the parameters. If you will go for any competitive exam, you have to undergo 2 types of examination. Number 1 is the general subject specific. Whatever you were talking in subject specific, yes, of course, both your objective and subjective knowledge will be tested. On the other hand, in general intelligence, you will be tested for किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, लैंग्वेज से, मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पेटियल फिगर्स दी हुई होंगी,
how you can join these stickers, you can make a design. Then your logic, Venn diagram, and then different kind of statement and conclusion type of. Similarly, if you want to assess a student for a specific discipline, a subject, there are number of parameters. So those parameters would be written on one side of the matrix. On other side of the matrix, what should be the rubrics? What should be the rubrics? Uski dimensions kya honi chahiye? You will prepare those rubrics, and then you will test the student on those rubrics. If you are not doing that, then in general you are giving 5 questions and you are just testing the subjective knowledge of the student, right? So this is second. Now coming to the next, I have brought this one also. Assessment is so vital in their pedagogical design. I have not taken even a single slide related to the student. Assessment is so vital in their pedagogical design. It is assessment of the student which will help you to design your pedagogical method. पिछली बार ये लेके गया था, पूरी की पूरी क्लास फेल हो गई. इसका मतलब कौन फेल हुआ? कौन फेल हुआ? उसका पेडागोजिकल और टीचिंग मेथड ठीक नहीं था, एक भी पास नहीं हुआ. 2 ही रीजन हो सकते हैं. आइदर द स्टाफ वाज टोटली अनअवेयर. क्या ड्यूरिंग द सेशन हमें पता लग सकता है बेहतर ढंग से किस चीज का? अभी आएंगे. रिजल्ट आया तो फिर तो पता लग हाँ. फिर पेडागोजी पता लगने का क्या है? I will appreciate your honesty. That is really desired. And because of that reason only, there are 2 types of testing: the internal testing and the final testing. And that internal testing, we do not do that internal testing honestly. Reason being, we have made the system complicated. Let us make it simple. Even your daily observation can help you. Which student is understanding and which student is not understanding. एक बार मेरे को बोला कि भाई आपने, but we need to be honest. We need to be honest. ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी award कर. You should have complete mindfulness. You should have the complete presence of mind, and then observe the student in the classroom. And on the basis of that observation itself, you can award the marks. एक student daily आपकी क्लास में participate करता है और आपके सवालों का ठीक जवाब देता है. क्या टेस्ट चाहिए आपको? दूसरा सब आपने 50 बार पूछा, एक भी सिंपल से सिंपल भी सवाल का जवाब नहीं देता, उस स्टूडेंट का तो फेलियर है ही है. लेकिन आप वो पेडागोजिकल भी मेथड नहीं ले आ पाए जिससे कि उस स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व कर सके. और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं कि कौन सा स्टूडेंट बिल्कुल ही डल है, पता है आपको. लेकिन 2 4 5 7 अगर एक टॉपर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, बाकी सब थल्ले थल्ले. राइट नाउ, इवैल्यूएटिव एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज. व्हाट इज स्ट्रेटजी? टेक्निक नहीं लिखा मैंने स्ट्रेटजी लिखा, स्पेसिफिक. क्या है स्ट्रेटजी? ये स्लाइड सबको मिलेंगी मैडम, देखे जाओ. मिल गई ना पुरानी वाली? नहीं, मैंने दे दी है फोगाट साहब. हाँ, सबको मिल गई है ना? ये भी आज ही मिल जाएंगे, नीड नॉट टू वरी. आप ही के लिए, और यूज करना इनको, कोई कॉपीराइट नहीं है इस पर मेरा, हालांकि मैंने बनाई. ये सबके लिए. लेट अस स्प्रेड द एजुकेशन. सो व्हाट इज स्ट्रेटजी? नहीं, मेरी तरफ से नहीं है कोई भी, मैं कभी नहीं इसको. ये लास्ट वाली लाइन के लिए मेरे को लगता है कि लेट अस स्प्रेड करें. हाँ, एजुकेशन को बढ़ाइए. हमारे पूर्वज क्या देखे गए? हमने इतना निकम्मा काम किया, बीजों को भी बांझ कर दिया अपनी, उसमें बांझ नहीं कर दिया. आप सब फार्मर्स हैं, बांझ कर दिया है, दोबारा नहीं उगती वो नस्ल. एक बार जो उग गई ना, नेक्स्ट टाइम आप उसको बो नहीं सकते. क्या देके गए थे हमें? ये देके गए थे क्या कि आने वाली जनरेशन को बांझ बीज देना. और ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, 3 साल बाद क्या कर देते हैं कि लाइसेंस कैंसिल. क्या लाइसेंस कैंसिल हो गया भाई? क्या हो गया? these are our menial ways to earn money. Menial है. एक बार आपने लाइसेंस दे दिया, उसके पैसे ले लिए, then every time we should not do that. So if दूसरा, मैं कहां से लेके आया हूं इस एजुकेशन? When I was born, at that time I was 100% handicapped. I was not able to see, I was not able to hear, I was not able to use my mind, I was not able to use my hand and legs. ऐसा ही था नहीं, इतना सा जब छोटा सा था, I was completely handicapped. And this world has given everything to me. So let us return it back to the world. Yes, of course, we should earn money.
but we should return that. So I will share that. Why strategy? I have used the word strategy. Sir, Why I have used the word strategy? What is strategy? There can be three words: plan, technique, and strategy. Why strategy? When I started my session, I told you that this world is gradually becoming more and more technological. In the technology, your simple plannings and techniques cannot work. You need strategies. Strategies means which are better than others. So what could be the best and why? In the past, there were only three streams: side, art side, and science side. But nowadays, if you will go to the science side itself, there are n number of disciplines. There are n number of disciplines. Similarly, in the art side, humanities and applied sciences, same is the case. In commerce, you see now what different disciplines are there. And if you want to develop the matrix, जो अभी हम बात कर रहे हैं, if you want to develop the matrix, then in that case, the testing of a cancer patient cannot be the same for testing of a patient of kidney. Similarly, if you want to test a student for any subject of commerce and you want to test a student of applied arts, the rubrics will be different, the parameters will be different. And for that, we need the different strategies. We need the different strategies. So it is evaluative strategies. Objective क्या है evaluative strategies के? The very first is to strength of the learner. और हम टेस्ट क्या करते हैं? मैं आप सबको एक चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना. ये कभी टेस्ट मत करना कि स्टूडेंट को क्या नहीं आया. ये टेस्ट करना कि उसको क्या क्या आ गया. अगर ये टेस्ट करोगे तो सारों को फेल कर दोगे. उसको क्या आ गया. और इसमें भी suppose you have 4 units and among those 4 units suppose there are 20 different topics. उस टॉपिक में भी ये टेस्ट करना कि इस टॉपिक में से इसको कितना आ गया. ये मत टेस्ट करना कि इसको तो ये टॉपिक आया ही नहीं, कितना जो बच गया है उसमें सपोर्ट करो फिर उसको. And that will be declared by your evaluative strategy. What student has written in the examination, that is not test of the student only, it is test of your teaching also. I did my best. I used all the strategies to teach this, but even then, majority of the difficulty level can be divided into 3 parts. What are those? The low, middle, and the high. If 20% people or 20% of student in your class can address the difficult question, it means your evaluative strategy is a good one. If 20% of your poor student, slow learner student could not address the simplest, easiest question, what I mean to say, your question paper should be a blending of 20% very easy type, 20% you can put up the difficult type, and rest 60% should be the mediocre one. So that you are giving, मैंने जो बोला ना, हमने ये टेस्ट करना है कि उसको आ कितना गया है. हमने इतना स्कोप देना है जो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं. Who is the best? Who can come in the merit? That 20% difficulty level is for them, right? And there are certain poor students also in mind who might not have understood. And there will be a student who is very poor on a particular topic, but maybe very good on the other topic. So when you are developing the assessment technique, in that you will keep that in your mind. So very first you will try to identify what is strength of the student and what is so. Why it is so? एक स्ट्रेंथ पे उसकी जिंदगी का काम बन सकता है पूरी का. कैसे कैसे ये एग्जांपल मैं बहुत जगह दिया करता हूँ और यहाँ फिर देता हूँ. रोहतक से कौन आए भाई? सोम वाले के समोसे खाए होंगे, है ना? सोम समोसे वाले. एक समोसे से 10,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी है पर डे की. आमदनी बोल रहा हूँ, सेल नहीं. एक समोसे से क्या है? स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ है. एक स्ट्रेंथ बच्चे को दे के भेज देना, एक स्ट्रेंथ, उसकी लाइफ निकल गई.
अभी मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ, वो इसका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का प्रोग्राम था ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें मैं बोल के आया हूँ कि इनको 10 टेस्ट सिखा देना, जिंदगी पार हो जाएगी। अगर किसी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 10 टेस्ट कंडक्ट करने आते हैं अच्छे से, सिंपल वाले, सिंपल की ज्यादा जरूरत होती है, HB टेस्ट करना आता है, ये ज्यादा कॉमनली ये जो कॉमन है वो 10 सिखा देना इनको, और ये 8-10 गांव के अंदर अपना एक छोटा सा दिन में 2:30-3 बजे तक अपने सैंपल इकट्ठे किए, शाम को उनकी टेस्टिंग करके अगले दिन नए सैंपल ले आएगा और उनके रिजल्ट दे आए, बढ़िया जिंदगी चलेगी। एंड दिस इज रिलेटेड टू अ सिंगल. Similarly, in the computer, I want to tell all the IT experts, you give just a single competency to your student and test it properly. क्या अभी मैं लेटेस्ट पानीपत में और कई जगह वहां पे ये बात हुई कि अगर आप कार्टेज फिलिंग सिखा देते हैं और एक बच्चा दिन में 10 कार्टेज फिलअप कर लेता है, क्या होगा भाई? किसी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ एक पार्ट. दिस इज अ पैटी एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर hardware applications and just a single. So you have to identify the strength of student. Strength means in my complete syllabus, this student is really very good in unit number 3, and in unit number 3 he is very good on the skill of students. ये इसकी strength है, इसी पर पकड़. And here is the need, how you will develop your pedagogy and what would be. And because of that reason only, I told you in the first day that this classroom is a group of students with different and unique individuals. And this strength identification is for that purpose. Next is identify the weaknesses of the learner. Yes, of course, you must know the weaknesses. Why we should know the strength? To strengthen them more. And why we should know the weakness? To convert them into the strengths. If you will identify the weakness of student at right time, you can convert them into the strength. Example, Fogart sisters. कैसे आइडेंटिफाई हुई? बहुत ही क्लासिकल पिक्चराइजेशन. वो एक बच्चे को कूटा ही दोनों बहनें, उससे कैसे आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ की? उसको फादर को क्या लगा, इसका मतलब तो इसमें भाई मेरे वाली जेनेटिक्स है. पकड़ के रगड़ दिया लड़का. किससे लड़वाया? बाद में टेस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए. वो जो ताऊ का लड़का था, प्रूव हो गया, आइडेंटिफाइड. लेकिन कुछ वीकनेसेस भी दिखी उसमें, एंड ही डिक्लेयर्ड. लास्ट में क्या रहा? वीकनेस नहीं रही, तभी गोल्ड. यस, एक रियल एग्जांपल देता हूँ. हुसैन बोल्ट का नाम सभी ने सुना होगा. तो शुरू में वो क्रिकेट खेलता था सर. किसी ने उसको ऑब्जर्व किया कि जो विकेट के बीच में वो काफी फास्ट भागता था. तो किसी ने कहा कि रनिंग काफी अच्छी है तेरी, रनिंग में क्यों ना जादू. तो उसने सर आपके आगे, मैं आपको मन्ना डे के गाने सुने हैं आपने? मन्ना डे वाज बेसिकली रेसलर था, चश्मा लगाता था. एंड वंस व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज रेसलिंग ना, he got his specs broken and there was injury, and because of that he got frustrated and he decided that I will not go for wrestling. And he shared this thing with one of his friend ki yaar, this injury has happened and it was a kind of accident for me, so I will not go for wrestling. उस दोस्त ने पता है क्या बताया? बोला तू पागल है फिर. You play very good tabla when you are sitting on the desk ना, you used to play tabla. वो जैसे कई बार स्टूडेंट बैठे करते हैं ना, वो ऐसे करता. बोले रहने दे. मन्ना डे की ये मैंने खुद बोला. बोला रहने देना, ऐसा होता है. बोले तू पार्टिसिपेट कर इस पर एनुअल फंक्शन. एंड ही गॉट फर्स्ट प्राइज. एंड फ्रॉम देयर व्हाट वाज डन? ही इज द बेस्ट क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. गा नहीं सकता कोई उस जैसे जो क्लासिकल की बात. अदरवाइज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जी ने तो कमाल ही कर दिया. सुरों को जो तोड़ा मरोड़ा है, जिस भी उसमें डलवा लो आप, हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, बकवास करते हुए. जो हुडली है वो सारा बकवास ही है और क्या है. लेकिन यू सी हाउ दिस मैन हैज फिक्स्ड द. सो आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइंग द वीकनेस एंड रिकॉग्नाइज द यूनिक लर्निंग नीड्स. एक एक बच्चे की आप स्टोरी बना लो अपने एक जगह पे. यूनिक नीड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट? एंड देन track the progress,
track the progress of student as well as track the effectiveness of your teaching. दोनों track होंगे. Then next is collect feedback. If you will not collect the feedback, there will be a problem. Again, I want to tell you, in case of Dangal, the father was consistently collecting the feedback of girl. Somewhere, girl started avoiding the father. Even then, he was collecting the feedback. What is feedback? What is feedback? I am delivering this. If I am not taking, मैं आप लोगों ने जो feedback दी, उसके बाद मैं organizer से I will go to them and I will ask them. And मैं कहूँगा कि जो उन्होंने बोला है positive, that I have received. If there is any comment for modification, for improvement, what I am today, it is because of the feedback taken from the people. If I will not improve, how I can improve? How I can improve? By the feedback. And friends, I want to tell all of you, whenever feedback is given, it is most of the time taken as a blame. मेरे को कैसे नहीं आता है? Never take your feedback as a blame. Check it, test it. If by the way the given feedback is not correct, ignore it, avoid it. If by the way it is correct, and आपको पता है कब पता लगेगा? If honestly you will analyze your feedback after 48 hours. Among the 48 hours, your blaming attitude, your ego will remain dominating. But gradually, when it will settle down, and by using your presence of mind, you will try to analyze whether the given feedback is correct or wrong. And if you will really test it, आप examine करेंगे. Examine जैसे student के paper को examine. The given feedback is correct or not. If it is correct, if it is partially correct, or if a very small part of it is correct, then इसका मतलब वो तो फिर correct है, तो आपको correct करना होगा. And this feedback is again related to your teaching as well as learning of the student, right? Now approaches क्या है? Traditional है, new forms है, और peer evaluation. हम आज तक भी traditional, we have become highly skilled, we have become highly technological, but still we are using the same. क्या है? Your test, exam, assignment और quiz. दो चार सवाल पूछ लिए, लिखवा लिए बच्चों से, असाइनमेंट दे दी या पेपर ले लिए. नहीं हो रहा है इससे. जब इंडस्ट्री में जाएगा तो कुछ और ही कराएंगे. अगर वो आपने पहले ही करा लिया होगा ना, तभी वो सक्सेसफुल होंगे वहां पे. अगर आपका ये अप्रोच होगा कि मेरी तरफ से होगा, मुझे क्या मतलब है, तो थोड़े दिन में दिक्कत होगी. साइंस साइड लगभग उड़ गई है हरियाणा के जो गांव के स्कूल है, गई वहां से. अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वालों को दिक्कत हो रही है कि ये कंप्यूटर वाले कहां से आ गए. ये फैक्ट बता रहा हूं मैं. रीजन क्या हुआ? They didn't pay. They enjoy. We have become teachers of physics, mathematics, and all. Attitude, that was not appropriate attitude. वो देखा चश्मे वाला, लाठी वाला, धोती वाला, देखा है? That attitude. क्या? He was near to some river, and one woman was there, and that woman was clad in a single dhoti. He asked, why you have not wear this upper part? So बोला पैसा ही नहीं है मेरे. And there itself Gandhi ji discarded, I will not wear kurta, I will wear only dhoti. मैं ये नहीं कह रहा कि आप गांधी बन जाइए, लेकिन जो पिछले सेशन में बात हुई, एटलीस्ट प्रोफेशनल तो हुई है. जो कमिटमेंट ले रखा है उसको तो पूरा करिए, राइट? सो ट्रेडिशनल will not work nowadays. Yes, it should be blending of all kind. Second is traditional, I have told you. Second is new form. क्या हो सकता है new form में? I told you, prepare a matrix, develop the rubrics of your subject and keep on changing that. Friends, those who will not update themselves means if technology is changing, we started with typewriters, then we switched to the computers. Those who didn't change from
typewriter to the computer, yes, there were certain things which were common in the computer, but computer was a bigger package. Typewriter was a smaller package. So if you want to shift from typewriter to the computer, you need to update yourself. Then after introduction of the computer, now lot many apps, now we are connected even to online. So there is a technology by using which we can become online. And to become online, I need to learn how I should connect myself, how I should use the technology. Same thing is happening in the teaching learning process. In Haryana, in 1970s, 60s, a teacher will take the student, ask them to sit under a tree, and he will hang the blackboard on the tree. And by using a simple chalk, he was capable to deliver the lecture. But now, because the world has become global village and technology has penetrated everywhere, so it is not possible to send the student with theoretical and conceptual knowledge only. There is need to give all kind of skills and abilities and competencies. And for that, whatever is necessary, that necessity will be provided by the teachers. And they need to. लेकिन अगर अभी किसी को बोला जाए कि आपको बदलना पड़ेगा, वहां सेक्रेटरीट में जाकर के नारे लगा सकते हैं हम सर्दियों में भी बैठकर, बदलने की बात ना करना हमारे। और इतना आसान है। मैंने अभी एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक बच्ची से हमने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए हिंड्रेंस। उसने इतना बढ़िया जवाब दिया कि दिमाग खुला का खुला है। बोले यस सर, टेक्नोलॉजी इज ए हिंड्रेंस, but remedy to that is technology again. If by the way there is hindrance in using any technology, if you cannot use the computer, उस कंप्यूटर में ही है आपकी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ही सिखा देगा आपको, उसी में है सब कुछ। There are number of things with which you can very easily, you can learn any application, any software. लेकिन वो एक लाइन है एक गाने की बड़ी अच्छी, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत। पहली बोलते हैं हम, आइए आपकी जरूरत में क्या है कि ये शरीर पूरा दिमाग समेत, सबसे भारी क्या है पता है? शरीर भारी नहीं है, ये भारी है। अब ये कैसे होगा? शरीर थोड़ी मना कर रहे हैं, शरीर थोड़ी। आप बिस्तर में लेटे हुए सुबह सुबह उठने के लिए कितनी ताकत लगती है? किसने रोक रखा? शरीर ने रोक रखा है या किसने रोक रखा है? दिमाग कहता है और पड़ा रखो। और ये सब जगह है, राइट? सो यू मस्ट inculcate the new one. Next one is the peer evaluation and self-assessment strategies. We must include, we must use the whole classroom as a resource. What could be the resource of a classroom? बताइए क्या क्या resource हो सकते हैं आपके classroom के? Teacher is the very first resource for. Again, I want to emphasize what I emphasized day before yesterday, that teacher is a facilitator. He should not behave like a dominant person holding the whole gamut of knowledge. No. His role is to facilitate, to behave like a gardener. What he will do? He will develop the soil. He will create the climatic condition. He will mix up the appropriate fertilizer and other things. And now everything is ready. And yes, it is season of sowing the seed. Now he has brought the best seed, and now seed is sown in the soil. And now he will observe. And as and when there will be germination and sprouting, whatever is required next. कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक उसको सूखा ही रखो जिससे अच्छा ग्रो करता है, लेकिन धान के पौधे तो पानी के ही अंदर लगाने पड़ते हैं। और अगर आपने उल्टा कर दिया कि धान के पौधे को ऐसी जगह लगा दिया जहां सूखा पड़ा था, जैसे कि जो गर्मियों की सब्जियां लगती हैं, वो आमतौर पर थोड़ा सा एक बार यू कैन इंक्रीज द मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड यू शो द सीड एंड देन इवन इन द ड्राइनेस। तरबूज कितना मोटा है, ड्राइनेस में से पानी खींचता है, वो कहां से ले? लेकिन अगर उसको आप धान के खेत में लगा दोगे तो बेली खत्म हो जाएगी, राइट? सो you involve the blending, that is peer evaluation. First is teacher. I told when sir you were asking
that you should be observant how my students are responding and how my students are taking. And there should be a record with you. You should have a diary in your attendance sheet itself. There should be a broader column. Number 1, आप टिक कर दो कि कितने उसके पास, सिर्फ टिक ही कर लो, महीने में कितनी बार उसने मेरे इंटरेक्शंस को रिस्पॉन्ड किया. Right? Then give chance to the class student to evaluate. I have personally done it. What I will do, as usual, my student will also feel difficulty in communication. So what I will do, I will ask each and everyone to come prepared for a delivery of 5 minutes, right? Then student is given chance and video recording is there. Student is being video recorded. I am there. The whole class is there. Now the student has delivered and one by one, everyone has delivered. Now we will start the videos. And very first, I will ask the student, comment on your presentation. And you will give 3 positive and 3 negative comments. Negative means which weaknesses you are feeling in your presentation, and 3 positivity. Then I will select 3 volunteers from the classroom. Okay, now you will give 2 positive and 2 weaknesses on the student. And by this way, just in a span of 6 months, if you are giving 3 chances to the student of that kind of presentation, you will find really a difference in their communication skill. And this is not only for the communication, this is for your biology. आपका क्या सब्जेक्ट है मैडम? हाँ, उनका तो सबसे ही अच्छा है. आपका तो मैडम मौज ही मौज है. आपने तो पता नहीं क्या किया है, लड़के भी आने लग गए. नमस्ते भाई, सब करके रखना. ब्यूटी वेलनेस वालों को इनका बहुत अच्छा, आपका बहुत, कंप्यूटर वाले और आपका धंधा बहुत बढ़िया चलेगा. वो मेरी बेटी अभी किसान आंदोलन हुआ ना, तो उसने मेरे को बोला कि पापा अगर किसानों ने अनाज देना बंद कर दिया. मैं कहा भाई मैं तो किसान का, मैं किसान का बेटा हूं और गरीब व्यक्ति हूं. तू किसान की बेटी नहीं है और तू हो सकता है गरीब की बेटी ना. प्रॉब्लम तेरी है, मेरी नहीं. रीजन क्या है? मैं अभी भी उसी रेत में जा सकता हूँ जिस रेत से मैं आया था, क्योंकि हमारे लिए तो वो सामान्य चीज. तू तो उतर ही नहीं सकती बिना चप्पल के. हमें तो चप्पल पड़ती थी, पहनते नहीं थे. राइट ना, पहनने के लिए मिलती थी लेकिन पड़ती ज्यादा. हमारे यहाँ तो एक ही ट्रीटमेंट होता था, बनाओ इसको सीधा. और पड़ोसी, घर वाले और कोई भी. इसीलिए आई वॉन्ट टू टेल यू, इन माई 12th क्लास आई कुड नो व्हाट इज सुसाइड. हिंदी का नव भारत टाइम्स पेपर था, उसमें खबर आई हुई थी कि आत्महत्या कर ली थी. आई आस्क्ड फ्रॉम माय फादर, आत्महत्या क्या होती है? बोले ये अपने आप ही मर गया. मैंने कहा अपने आप ही क्यों मर गया? बोले इसने फांसी खा ली. मैं फांसी तो सरकार देती है. बोले नहीं नहीं, इसने खुद ही खा ली. एंड रियली आई वाज कंफ्यूज्ड, हाउ समबडी कैन डू दैट. बोले कोई इज्जत बेइज्जती होगी. मैंने कहा हमारे को तो नहीं होती. अब मुझे समझ में आया, वो इतनी बेइज्जती कर देते थे, इतनी कर देते थे कि इज्जत का झगड़ा ही नहीं रहता था. इसलिए मरना मराना, मतलब सेरेमोनियल पिटाई होती थी सबकी. आज उसका पिटा है, आज उसका पिटा है, और वो एग्जाम्पलरी होता था कि वो उस पर पिटाया, भाई ये मत करना नहीं कल तेरा नंबर पड़ेगा. राइट. So we were talking about peer evaluation. Involve the class so that they can also comment, participate in the evaluation. They will comment, चाहे वो biology हो, मैडम का wellness हो, या कोई भी. So use your classroom as a whole, as resource for your evaluation. And I told you that your self appraisal also, your self eval, give chance to the student. Tell me, I want to give you one example. I invited Dr. Hawa Singh Deswalji, who had been the registrar of कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. उनकी मैडम आजकल, मैडम क्या नाम है उनका, वाइस चांसलर हैं भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी. हाँ जी, सुदेश मैडम, उनसे भी बहुत अच्छी. तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया. ही हैड बीन प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट. देशवाल कॉमर्स और मैनेजमेंट के प्रोफेसर से. हाँ, तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया. So what he will do during the viva, he will ask, पहले he will ask, okay beta, which subject or which topic is you are comfortable. You are comfortable. Then student will, sir, I am comfortable in on so and so topic. Oh, okay, I will ask question from there.
उसी की चॉइस हो गई ना. Now he will ask 5 questions. After asking the 5 questions, he will ask, okay beta, you tell me how much marks should be given to you. How much marks? अब कई बड़े extraordinary bold बच्चे होते हैं, sir I should get 80%. Would you like to put me in the corrupt practices? बोले sir कैसे? You have replied only to the 2 questions, and those replies were not even correct, partially correct, and you are asking for 80%. So give chance to your students for self-evaluation. Include your peer. और हो सके तो एक दिन बायोलॉजी वाले उनको भी बुला ले या दूसरे बायोलॉजी वाले को बुला ले कि सर आप इवेल्युएट कर. And then this evaluation is for the learning of student as well as this is feedback for your teaching also, right? Benefits क्या होंगे सेल्फ असेसमेंट के? मैं स्पेसिफिकली सेल्फ असेसमेंट के आपको अंडरस्टैंडिंग का पता लगेगा. जो 80% मांग रहा है 20% परफॉर्मेंस पे, इसका मतलब उसको गड़बड़ है अंडरस्टैंडिंग में, करेक्ट करना पड़ेगा, राइट? Second one is promote independence. If really assessment, it is not that student will ask for 80%. You will find certain student who will underestimate themselves. If your student is underestimating themselves, then it means the confidence of student is low, and you need to work on that student. If student is underestimating, peer is giving very good, teacher is giving very good, but student will say, if you will ask how much percent you can score, or on a scale of 10, how much award you will give to yourself, generally student will say, I will give 4. But student is considering that this student can 6, and peer is giving again 6. That clearly shows that student is underestimating. So it will help in this. Then consolidate learning. Yes. How the learning can be consolidated? Self-assessment. It is a kind of feedback to the student itself, right? Then next is develop evaluative skill. Why there is need to develop the evaluative skills? लाइफ में बड़े होकर के दाल भी खरीदने जाओगे, बाजरा भी खरीदने जाओगे, और सब कुछ खरीदने जाओगे, और कोई भी जो खरीदारी है या कोई जो वाइफ लेके आए हो या जो हस्बैंड लेके आए हो, उसका भी इवैल्यूएशन होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं इवैल्यूएशन किया ना, वो आई लव यू एंड यू लव यू करके और शादी कर ली, थोड़े दिन में पता चला ये क्या ले आई मैं. रीजन क्या था कि इवैल्यूएशन ठीक नहीं था. There are certain, I want to give you one example. One of my relatives' son was really very desperate or very hyper kind. So what he will do? In a hurry, he will purchase everything. Once he asked me, you please come with me, I want to purchase a TV. I go, okay. Then there were a number of brand of TVs displayed on the wall of the showroom. So he got attracted with the LG. मैंने कहा मुझे लगता है कि सोनी वाला का बेटर हो. बोले नहीं, मैंने तो डिसाइड कर. अरे भाई किस लिए? मैंने अपने मन में सोचा किस लिए लेके आया था, राइट? देन आई आस्क्ड टू द शॉपकीपर, स्विच ऑफ दिस एंड प्ले द सोनी वन. वो बोला मैं तो लेता ही नहीं, मैं तो सोनी लूँ. थोड़े दिन में वो भी पसंद नहीं आया. अब उसकी शादी होने लगी. मैंने उसको बुला के कहा मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे हैं, वो पंडित आएगा, वो बोलेगा कि दोनों बैठ जाओ, थोड़ी सी दही रख, चावल रख, ये रख, वो रख, और क्या नहीं रख, और फिर तेरी चक्री कटवाएगा. अगर गलती से वो चक्री कट गई ना, उसके बाद लाभ ही नहीं तोड़ सकता उसको. पहले अपना इवेल्युएट कर लेना. अब वो गया लड़की देखने, वो तो तुरंत खा था जी. पहली लड़की ने ही डिस्कार्ड कर दिया उसको, दूसरी ने भी कर दिया, अब गऊ हो गया कि कैसी भी दिलवा दो. मैं कहा ये भी गलत. So it is not evaluation of learning only. Evaluation is a compulsory mean of life. If you will not give this capability to your problem solving, decision making, evaluation, हर जगह problem है life में. Every point of time you need to take decision, and if you have not given these capabilities to your student, so this self evaluation will help in developing the evaluative. Then increase engagement and deeper understanding. We will not now coming to the another type of your
formal evaluative strategies, assessment strategies, and informal. Formal हमें पता है. I will not talk much about it. Already I have discussed. What are informal? I have given certain types of informal oral presentation. कैसे हो सकता है oral presentation? मैडम ने बताया कि she is from beauty and wellness. After completion of the class, just she will ask any student, okay, you come and you speak on so and so sub point of today's my presentation. 2 minute बोलो उसको. सुना बच्चों को. So oral presentation may be for today's lecture, yesterday's lecture, and suppose you want to use oral presentation as a surprise test. Surprise test means already you have taught 2 units, right? And after teaching 2 units, you want to take test, you want to test what kind of teaching you have given to the student and what learning has taken place. If you want to test that, then you can give a surprise test of 5 to 7 minutes. You bring 3 or 4 very easy short answer question, give to the question and give to the student and ask them to write their answers, and they have to write them just in 10 minutes. उनमें से 5 को खड़ा कर लीजिए कि क्विकली. मैं एक और आपको बताता हूं, इवैल्यूएटिव स्ट्रेटजीज की आजकल शायद आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी. Nowadays students are writing anything in the answer sheet. There are 2 methods of writing the answer sheet. Number 1, when it is well organized, when knowledge has been created and it is organized on the answer sheet, and now it is very easy for the evaluator. Evaluator will understand and will award the marks. And second is vomiting the knowledge on the answer sheet. I have vomited the knowledge. Now it is given to the evaluator. Now you check what is useful or what is not useful. It is up to you. And another thing, they will write Jai Mata Di on the top and on the bottom, both side border. In between, there is a very small space of answer sheet, and in every line only 4 or 5 words are written. And when you will sometimes seriously read them, then it is nothing. Sometimes they just copy the question. So how you can check? I got irritated. Nowadays I am evaluating for the PhD and PG students, and even PG students are doing that. So what I did once, okay, today I will conduct your test, right? So I conducted the test. I gave 3 questions, and they had to attempt only 2. So they attempted 2. And I motivate, okay, write best, write best. Throughout that, the time given was half an hour. So I motivated them. After writing, I collected the answer sheet. Then I started calling one by. Okay, I tested the answer sheet. Which one is the horrible? Right? I picked out, called the student. उसको बोला बेटा सबको सुना क्या लिख रखा है. एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बोला कि क्वेश्चन पढ़ पहले. उसने पढ़ दिया. Then I asked, have you understood the question? Then student explained, yes sir, I have understood. Clearly ना? हाँ. So जो understand किया उसी का आंसर लिखा है ना? Yes sir. मैंने, वो लड़की थी, मैंने कहा ले बेटा, बोला कि ऐसे ऐसे करने, क्योंकि उसमें वो लिख रखा है, वो पढ़ के सुना ही नहीं सकती थी. पीयर असेसमेंट कराया. क्या करना चाहिए इसका? कई जो अच्छे स्टूडेंट उन्होंने बोल दिया सर 0. बोले सर 0 से भी नहीं, इसके तो पीछे के भी कुछ मार्क्स हो वो भी काट लिए जाने चाहिए. And just in 2 such kind of attempts, now the student started coming serious for the examination. So when you are giving assignment, you most of the time students are throwing the assignment on your table, and even you are not bothering to see them, and you will award the marks. Evaluate them, hand over them, give them back, and give remarks. If something good is written, then put a bracket and write very good, nicely described. If someone not clear, if something nuisance, I could not understand what you have written and why you have written. जो भी ऐसा लिख रखा हो आप उसको mark. I was talking to one of the CBSE deputy director. I asked, बोले सर ये suicidal जो cases हैं इसके कारण जो your evaluation has become very liberal. What is meaning of that? It is fake. Second one is journaling. What is journaling?
उन्होंने जो नोट्स बनाए, हम लिबरल हो गए कि कई बच्चे मर ना जाए इसलिए ज्यादा मार्क्स दे दो। हरियाणा में नहीं है, मैंने इसीलिए सीबीएसई का एग्जांपल लिया। हालांकि पिछले 1-2 साल से हरियाणा में भी हो गया है, हरियाणा में भी हो गया है, पहले नहीं था। हरियाणा इवेल्युएशन हैज बीन, हरियाणा बोर्ड का जो इवेल्युएशन होता था वो अप्रोप्रिएट होता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से उसमें भी आ रहा है। आप देखना कि मार्क्स कहां पहुंच गए। पर सिलेबस तो इसी हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि अच्छे नंबर आए, +2 में अच्छे नंबर आए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से टॉपिक ले रखे हैं। जो नॉन बोर्ड एग्जाम है उसमें टॉपिक्स एंड वी नीड टू वो आप बोल रहे हैं कि वो आसानी से पास हो जाए है, सिलेबस डिजाइन करके एग्जाम दिया गया है, वो आसानी से पास। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, तीनों टफनेसेस में से बच्चों को निकाल देना, ये टूटेंगे बाद में। फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकली भी आप वो होंगे पांडव, वो होंगे राजा के बच्चे, लेकिन उनका फिजिक आपने देखा था? नहीं, सबका ऐसा होता था। ब्राह्मण दौड़ दौड़ करके जाता था और उनके फेरे कराने कई गांवों में जब भटक के आता था, तब किसान सारे दिन खेत में काम करता था। तीसरा, और जो जितनी भी अलग अलग हमारे यहाँ जो भी वो है, सब मेहनत मशक्कत करते थे, इसलिए फिजिक ठीक होती थी, मेंटली भी ठीक होती थी और इमोशनली। लेकिन अब हम अपनी जनरेशंस को वीक कर रहे हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिलीज एज वेल एज टीचर्स दैट देयर स्टूडेंट शुड गो अक्रॉस द फिजिकल टफनेस, इमोशनल टफनेस एंड मेंटल टफनेस, ऑल उसका टेस्ट हो जाए। You are teaching the student to make him fit for a job, right now? To make him fit for a job. What he will do on the job? He would be doing certain job roles. Job roles na? Identify the job roles. और उनका एक्टिंग करा दो, राइट ना? आइडेंटिफाई द जॉब रोल। कैसे? कोई भी एक जॉब रोल बताओ किसी का। स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, स्टोर ऑपरेशन का काम करना हो, उसका ड्रामा क्रिएट कर दो। कंप्यूटर्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या इंजीनियर है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर है। देयर आर नंबर ऑफ जॉब रोल्स। आइडेंटिफाई द जॉब रोल and then how drama can be or role play can be created. And your role play in drama should not be more than 5 to 7 minutes, either in the beginning of your lecture or at the end of your lecture, right? Informal assessment, already I have now need and importance of assessment strategies. I have highlighted the word assessment for learning. What is very first importance? For learning. Second, as learning, and third one is of learning, right? Again I am going back. Assessment for learning, whether the learning has taken place or not. Second one is as learning, what kind of learning. Third one is of learning. These are three basic need and importance of assessment conduction, right? Now coming, किस तरह की कितनी हो सकती है? These are generally you will find 4, and the 4 are diagnostic, formative, interim and summative. Benchmarking I have ये क्यों मैंने ऐड किया है, या I have taken it, I found it very good, so I will share. What is diagnostic? Anyone can help me? What is diagnosis? What is diagnosis? The root cause. Yes. Yes. Knowing about the problem and if possible its reason. Friends, if you have really identified the problem and you know very well what are reason for that problem, solution is there. For cancer, we know the problem, but we do not know what are reason for the problem. So why we could not?
Same is the case with HIV. Whatever are terminal diseases, we know the problem, but we do not know the reason for it. And if we do not know the reason, solution is very difficult. कोविड कैसे फैलता है? आंख, नाक और मुंह. Wash the hand. Better don't touch your eyes and mouth with your, and even nose with your hand. Right? Second, by inhaling also. When there are suspended particle exhaled by the people in the environment, if those particles or suspended droplets can be inhaled, that may also. So put a mask. ये treatment एक तरह का. Otherwise, the vaccination is another treatment, because we could understand how this is spreading and how this can be controlled. Right? So diagnostic means, yes, knowing the problem, giving problematic kind of assignments and then finding the reason and solving that. And this is for the assessment and evaluation. Second one is, ये स्लाइड्स में दूंगा, आप जरूर इनमें से गो थ्रू होंगे, थोड़ा सा टाइम का वो है, तो इसलिए आई एम डायग्नोस्टिक में ये जो हमारी है, हमें can it be possible to implement this role during the why not प्रॉब्लम बताओ. it is time consuming. कैसे Simultaneously. कैसे? एक मिनट, वो बहुत अच्छा उन्होंने इशू उठाया. ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज नहीं है, मैं शुरू में बोल रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे, ये माइंडसेट है. कैसे है? अभी आपके सामने बात करें, आपने बहुत अच्छा इशू उठाया. आई अप्रिशिएट. Preparing our syllabus, touching the level of objectives, or we can say that particular chapters have been issued for this month. Right. While covering that section, how can you? You go to the classroom. We have no enough time. किसके लिए? We are given number of. एक बार आप सुन लो. अब मैंने आपका पूरा सुना है. Right? Now you are going for the first unit. Say first topic. Okay. You go to the classroom and go prepared with 3 questions. Only 3. One is very simple. One is. कोई भी अगर अंदर मन में भी बोलेगा तो मुझे यहाँ तक सुनाई दे. या तो मैं उधर शिफ्ट कर लूं एक बार. बहुत अच्छी बात बता. My request. Go with 3 questions. One is very simple. Second one is the mediocre. Third one is a difficult. Ask these 3 questions from 3 students. A slow learner, or a weak learner, or a weak student, a mediocre student, and a good student. कितना टाइम लगेगा डॉक्टर सर? और मन में ही बना के लेके जाना, लिख के मत ले जाना. जाके आपको स्टेटस पता चल जाएगा क्लास का क्या. डायग्नोस्टिक हो गया, आपने डायग्नोज कर लिया बिल्कुल कि क्या लेवल है मेरी क्लास, और वहीं से उठाना पड़ेगा. कल मैंने बताया था, परसों आपको बताया था. इफ क्या था, वन ऑफ द प्रिंसिपल वाज यू कैन बिल्ड अप द new knowledge on the current knowledge. If current knowledge is at a lower platform and your new knowledge is at a higher platform and there is a gap in between that, सारा का सारा आपका सिर के ऊपर से जाएगा स्टूडेंट्स के. ऐसा हो रहा है सरकारी स्कूलों में. दूसरा एक और भी आपको मैं बताता हूँ, सरकारी स्कूलों से बढ़िया टीचर नहीं है कहीं भी. है नहीं, लेकिन वो निश्चिंत हो गए. वो निश्चिंत हो गए. They were not their passion was not teaching. Their passion was earning. They have started earning and they have become indifferent. They have become indifferent. Basically वो बिजनेसमैन ही थे. उनको बिजनेसमैन ही होना चाहिए. Right now, actually this lecture is being recorded. Otherwise, I have a real anecdote. What happens, and it is not only teachers are not that kind of businessmen. What kind of businessmen the doctors are? Yes. What kind of doctors they are? They are really the businessmen. They are not worried about. They are taking the patient as a delivering women
and they will declare. Really, this happened. One of my friend, his wife was pregnant and declared that either in 1 or 2 days she will deliver. So she was taken to the hospital, and their doctor declared that umbilical cord is wrapped in the neck, and child has. उसने बोला भाई वो उसके गले में फंस रही है ना, मेरा बच्चा है भाई, मर जाएगा, डिलीवर कर उसको. बोले मैं तो नहीं कर सकता. And he took his wife to some other hospital, and then उसने बोला कि जो भी है उसने स्टूल पास कर दिया, कुछ भी कर दिया. I will wait for that, and if by the way destiny is that my child will die, I am ready for that, but I will not go for any kind of surgical. And the baby took normal birth. लेकिन ये सब कौन लेगा इस चैलेंज? इट इज रियली, आप उस मदर को बोल दो आप कि ऐसा हो, कहेगा यार तू 4 ऑपरेशन करा दे मेरे, कैसे भी कर, मुझे मेरा बच्चा ठीक चाहिए. Sir, you are basically from ISA. Presently, I think you are in Vishwakarma. No. I am from Kurukshetra. And I am basically from Delhi, but my workplace had been Haryana. Okay. The thing is that I am bringing for you. I am residing in a very small city of Kurukshetra. That is a sub-division. But the problem you raised regarding the delivery, questions are same in every place. Whether that is in Gurgaon, the doctor is in Gurgaon, or in a very small village of Haryana. सर उनका क्यों ले रहे हो? अपना ही लो ना. नहीं, आप उनका क्यों ले रहे हो? अपना ही लो ना. जो ये मास्टर बच रहे हैं काम करने से, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में चले जाओ, सबके पास वही स्ट्रेटेजी है काम से बचने की, है या नहीं है? सबके पास वही है. और ये मैंने आपसे शुरू में ही कि भाई हम तो सारे एक ही हैं, यहाँ पे तो बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे डर लगता है. ऐसा बोलता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है ऐसा. दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू कैनॉट स्पीक राइटिस्ट, यू कैनॉट स्पीक लेफ्टिस्ट, यू कैनॉट स्पीक जेंडर ओरिएंटेड. आपको अपना लेक्चर यहाँ तो आई एम डिलीवरिंग विद ऑल माई लेफ्ट एंड राइट, but if you are going there na, you have to take care. Reason being, if you will deliver anything masculine na, wo women khadi ho jayenge. He is a masculine person, he is not feminist. Or leftist or rightist to bilkul talwar liye khade rehte hain, right na? So let us see towards us, those who are not dedicated and contributing, all they have the same strategies, right? So diagnostic. Now coming to the next, formative. What is that formative? What is that formative? There are certain philosophers who understand that the knowledge, the skill is formed in a structure. So there is need to test that also. What is capability of forming and structuring the knowledge and skills? The test should also be conducted. कैसे? कैसे? एक बच्चे को अगर एप्पल पूछा गया तो वो क्या उसके माइंड में आता है, कैसे ड्रॉ करेगा? आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं. Biology is then further specialized as anatomy and physiology, right? So when you are teaching biology and you are teaching, this is the rib frame, and this is known as chest. Why it is known as chest? सर बंद कर दो इसको, उल्टा मार लो यहाँ पे मुद्दा, right ना? Why it is known as chest? Chest is a place where something very precious is kept. So whatever organs are kept here in this frame, they are really very precious. Your heart is there, your lungs are there, and some part of your pancreas and all they are covered. Right? If you want to teach to the student will form it in the mind. So that capability should, or that competency, that ability should also be tested. अब कैसे डिजाइन करेंगे उसको? आपको उसकी स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट, बायोलॉजी की अलग होगी और दूसरों की अलग होगी. मुझे एक बार फोन लेना पड़ेगा, मेरे वॉइस सांस लग. हेलो, मेरा मैं किसी सेशन में हूँ, कंप्लीट करते ही बात करते. हाँ ठीक है. सो फॉर्मेट क्या टाइम हो गया? नहीं, मैंने बोला 4 से 5 मिनट पहले, मेरी गारंटी है, छोड़ दूंगा.
हमने बस पकड़ ली थी मुझे लास्ट नहीं सर मुझे नहीं, उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने मुझे बोला कि दे वांट टू मेक यू फ्री अप टू 4:30. सो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आई विल. आप अभी कहते हैं आई विल क्लोज, लेकिन एक बार ऑर्गेनाइजेशन मुझे बात करनी. हाँ, एक बार मुझे बात करनी है. आप बुलवा लो, यहाँ पे एक कोई भी जाके बुला लो. मीनवाइल आई विल कैरी ऑन, राइट ना. देन फॉर्मेटिव नेक्स्ट इज interim. Interim, what is interim? Whatever you have taught, take a sample of that, whether same has been acquired or not. That is interim. Your internal exams are the interim testing. Uska bhi rubric alag alag hona chahiye. If you have handed over skill, then skill should be tested interim. Suppose in computer sciences, how much software learning you have imparted, out of that how much has been acquired. It is not easy sometimes. Suppose you want to learn the Excel sheet. Excel will take number of months. So how much has been taught? Out of that, how much has been learned? You are teaching the biology. In the biology, the complete biology of the body is a very common. There are 10 systems. So how many systems you have taught? And biology doesn't involve the human beings only. Biology, the complete biosphere, right? So interim. And then last is benchmark. What is benchmark? Anyone? What is benchmark? Best with respect to what? And what is that level? highest Anyone can help me in understanding the exact meaning of benchmark. Madam, ठीक है बिल्कुल, लेकिन let us more crystallize it. What is benchmark? Yes, it is related to the perfection, but what kind of perfection? It should be the ultimate perfection. Ultimate perfection means what is best in your doing and what best others are doing, combining both, and how it can be done in the education. What best practices you are using, or what best has been learned by your student, and what outside other teachers are doing, blending both and then assessing, or using such strategies which are best being used by others as well as by you, and then assessing your student. That is benchmark assessment. So in biology itself, you would be having your strategies to evaluate, but if you will go to some other students, you will find people using other strategies also. You will find that yes, these are better than mine. So whatever best I am using, I will keep them, and what best one or two I have picked up, I will use these also, so that you can really ensure you're teaching best and you can really ensure the best learning. Right? So this is benchmark. And last one is summative. Summative means when you are concluding, you have taught the whole gamut of your syllabus, your curriculum, your everything you have delivered, and then you want to evaluate. Or you can say it is a kind of end-term examination. And when I am speaking end-term examination, end-term examination, again the set of rubrics. उसका प्रैक्टिकल लेना है, लर्निंग बाय परफॉर्मेंस कराना है, सिमुलेशन में लेके जाना है उसको, उसका रिटन टेस्ट भी लेना है, उसका वाइवा भी लेना है. सबमिटिव का हम मीनिंग अदरवाइज क्या लगाते हैं कि ले तो लिया 70 मार्क्स का, वो तो बेंचमार्क में भी है. और बेंचमार्क सब में लग सकता है, डायग्नोस्टिक में भी बेंचमार्क लग सकता है, फॉर्मेटिव में भी लग सकता है. बेंचमार्क इज अ स्ट्रेटेजी, बेंचमार्क इटसेल्फ इज अ स्ट्रेटेजी. But at some level, we will mark the points according to our easiness. जैसे हम लोग अपने हिसाब से स्टैंडर्ड घोषित करेंगे कि ये बढ़िया है, बढ़िया है. That is not benchmark. That is how can we solve that problem? मार्केट बोलेगी और नहीं बोल रही क्या? बोलेगी, वो बोलेगी, बोलेगी या नहीं बोलेगी? ये मार्केट है मेरी, ये बोलेगी. अगर मैंने डिलीवर किया है तो मार्केट बोलेगी, और अगर मार्केट नहीं बोल रही है ना. एक एग्जांपल सुनाता हूँ बहुत अच्छा, सचिन तेंदुलकर का, ये बड़ा कॉमन यूज करता हूँ. सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान में गया एंड ही वाज प्लेइंग शोएब अख्तर के अगेंस्ट. शोएब अख्तर इज फास्टेस्ट बॉलर एंड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर.
Right? He's the best bowler and the fastest bowler. Sachin Tendulkar is the best batsman. Right? So he was interviewed by the press. What he will do? He didn't say anything. 2-3 बार पूछा उससे क्या करोगे, कुछ नहीं बोला. उससे भी पूछा शोएब अख्तर से क्या करोगे, ये कर दूंगा. वो कम बोलता है, वो थोड़ा ज्यादा बोलता है, तो वो ज्यादा बोला, खूब बोला. Right? Now the Sachin Tendulkar was playing and he was beating शोएब अख्तर like anything. इमरान खान कैप्टन था, उसने जाके कहा क्या कर रहे हैं. Well, I am the best bowler and I am the fastest bowler of the world. But by the way, the batsman standing before me is the best batsman. And today is his day. Be travel. And I have done my best. And he scored double century. Then he came out of the stadium and same press reporter again asked, you didn't utter even a single word on that day. And you played so best. पता है उसने क्या बोला? अब ये आपको जो बोल रहे थे ना, बोला कि मेरा बल्ला बोलेगा ना, तो मैं बोला. और अगर मेरा बल्ला बोलता ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा. राइट? और वो बल्ला क्या है? उसका बल्ला जी, उसकी मार्केट वहां स्टेडियम में है. आपकी मार्केट आपके स्टूडेंट्स हैं. मेरी मार्केट ये बैठी है यहाँ. अगर ये बोलेगी ना, मेरे से जाते ही पूछा उन्होंने, फोगाट जी ने, और उन्होंने कैसा रहा. मैं तो अपने गीत गाऊंगा ही, आप अपने उनसे पूछो. अगर वो बोलेंगे तो from this level there should be the declaration of some benchmarks, and that we have to achieve. It can be better way because वही same thing के हम लोग हमें मिल गया तो हम लोग फ्री हैं. बेस्ट है, हमारे पास सरकारी डिपार्टमेंट है, टीचर्स अच्छे हैं, बेस्ट है, लेकिन वो फ्री हो गए, आराम. तो इस चीज को तोड़ने के लिए that is because I raised ये आप लोगों को आपस में काम करना होगा. है ना. ये आप लोगों को काम करना. आप मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ दिन जाके देखिए, हमने ये काम किया. कैसे किया है? बाय द वे, वी हैव अपॉर्चुनिटी. सर, आई नीड योर अटेंशन. We have chance to select our team. I am a dean, so me and my vice chancellor. It is a team, so we are bringing the best. वो नहीं सुनता किसी की भी, और ना हम नहीं सुनते. ऐसा भी कई बार हुआ है कि 12 कैंडिडेट थे, हमने डिक्लेयर कर दिया नॉट फाउंड सुटेबल. था ही नहीं कोई सुटेबल. और आप क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान में ही रह रहे होंगे सबके. और रेगुलर पोजीशंस की बात बोल रहा हूं मैं आपको, हमने घुसने नहीं दिया. राइट? दूसरा एक कल्चर है वहां. मैं यहाँ पे 1:30 पे पहुंच गया था और कंप्लीट 4 बजे का बोला आई विल डिलीवर माय लेक्चर अप टू 3:55, और वो भी आप लोगों ने. अदरवाइज इट वाज डिसाइडेड अप टू 4:30. लेकिन आई अंडरस्टैंड बिकॉज women आर देयर, दे हैव टू गो देयर होम बैक. सो ये हमें करना पड़ेगा. और कई सारे ऐसे हैं कि इसके करने में दिक्कत खड़ी करेंगे, तो देख लेना. आसान काम नहीं है. हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपने ये कर दिया तो ये इंस्टीट्यूट अच्छी हो जाएगी. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनी है देश में, और वो बनते ही खत्म हो गई केवल ऐसे ही. मैं आपकी हेल्प के लिए मैंने एक लिस्ट इसमें बनाई हुई है. जो आप बोल रहे थे ना, आपके काम को आसान करने की मैंने कोशिश की. इजीली यूज कर सकते हैं. एक बार एक यूज कर रहे हो. मैं ये देके जाऊंगा आपको. नहीं, आपको ये मिलेंगी, स्लाइड्स मिलेंगी, आप ही की हैं ये. पूरा 20 की है, और भी नेट से मिल जाएंगे. लेकिन वो बरसात की एक रात की वो है मूवी है, उसकी एक कव्वाली है, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत कठिन है डगर बन गए, कैसे भर लाऊं मैं यमुना से मत, मोरी लाज राखो राखो राखो, मोरी लाज राखो राखो. बहुत कठिन है डगर बन गए. करना पड़ेगा. अब पंगा आपने लिया है ये बात कर. मैंने ये कैसे करना है वो भी डाल दिया 20 के 20 का. मैं आपको बता नहीं रहा हूं. हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा. आप लोगों को पता है जिराफ की गर्दन में 7 ही गाड़ियां हैं, हमारी में भी 7 ही. बट जिराफ वाज डिजायरस ऑफ प्लकिंग द लीव ऑफ वेरी हाई ट्रीज. सो द जिराफ डेवलप्ड सच अ लॉन्ग नेक, and we were very much interested. We can have the best intelligence. So if we check the body mass index
in comparison to the brain, the human brain is the largest brain. And इतना जोर से स्टॉप हुआ हुआ, उसके ऊपर रिंकल्स है, ऊपर स्पेस थोड़ा है, सामान ज्यादा भर गया है। क्या हम बनना चाहते हैं? वो हमारे, जो मैं आज हूं, ये मेरी अपनी इच्छा का प्रतिफल है। हाँ, समष्टि इच्छा भी है, लेकिन किसकी डोमिनेट करती है? ये देश वही है, और लीडर्स देख लो आप, और चेंज देख लो। व्हाट इज विल पावर बिहाइंड व्हाट यू वांट टू डू? यू आर अनस्टॉपेबल इफ यू विल फॉल प्रे ऑफ सर्कमस्टांसेस ना। मैंने बोला ना, कल वो दिखाया था, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। नंबर वन, दोज हु आर स्लेव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। क्या करेंगे? एक आधे से तो हाल भी पूछो ना आप, बस जी कट रहे हैं, काट भाई। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ, कट रहे, काट। और एक आधे से पूछो, गोइंग वंडरफुल, गोइंग वंडरफुल। So what you want to be? So all these I have included so that you can go through and you can use them. It is for you only, right? Now coming to the learning resources, last है, and I have got only 4 minutes. 4 मिनट में मैं quickly करता हूँ। एनिमेशंस का यूज करिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके, उसमें लेके आइए। कम से कम 2 बार, पूरे सेशन में 2 बार एनिमेशन यूज करो। असेसमेंट टूल्स अच्छे अपने डेवलप करिए, हर टाइम बदलिए उसको, सेम मत रखिए। उसके बाद असाइनमेंट्स दीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिविंग क्वेश्चन एंड असाइनमेंट? असाइनमेंट व्हेन स्टूडेंट इज मूव्ड, इट शुड नॉट बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, इट शुड नॉट बी अवेलेबल एनीवेयर। उसको उठ के जाना पड़े, बुक देखनी पड़े, आपके पास भी आना पड़े कि सर ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा। लर्निंग बाय डूइंग, असाइनमेंट इज अ मीन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट, केस स्टडी, छोटे छोटे केस दीजिए आप। देन कलेक्शन, कलेक्ट कराइए मटेरियल, राइट? देन डेवलपमेंटल टूल, देन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। आई वांट टू गिव यू अ रियल एग्जांपल. Once I was teaching to the student of management, and my class will start early in the morning at 8 and it will go up to the 8. And some of the students, they were bit lazy kind. So what I decided that I will go for the drill. Drill कौन सी पता है? वो फौजियों वाली ड्रिल पकड़ के ले आया मैं फौजी, और एक हफ्ते को चेयरमैन बोला कि लड़कियां भी हैं। मैं कहा सर लड़कियों की जरूर कराऊंगा, और लड़कियों ने ही एजिटेट किया सबसे पहले। मैंने कहा बेटा मैंने आज तक कोई गलत किया? बोले नहीं। मैं कहा 2 दिन 3 दिन टॉलरेट कर लो, अगर नहीं कहोगी ना बंद कर दो। बोले ठीक है। ऑन थर्ड डे आई केम एंड आई डिक्लेयर्ड दैट आई एम गोइंग टू क्लोज। वो जो लड़कियां कह रही थी ना, बोली नहीं सर, इट विल गो फॉर 1 वीक। रियली इट हैज मेड ए चेंज इन आवर लाइफ। सीधा सीधा संबंध है डिसिप्लिन। भगवान बुद्ध ने बोला है कि शीलाचरण से ही आप आत्मानुभव को पहुंच सकते हैं। अगर आपका शीलाचरण, और शीलाचरण का एक ही इंस्ट्रूमेंट है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो शीलाचरण नहीं हो सकता, और शीलाचरण नहीं है तो इतनी समस्या। शीलाचरण का सीधा सीधा है, अगर शीलाचरण नहीं कर रहे हैं तो क्या करोगे? लाइफ में समस्या ही समस्या आएंगी, उसी में उलझे रह जाओ। आत्मानुभव की तो बात ही छोड़ दो, आप जिंदगी ठीक से जी लेना, राइट? सो then your e-portfolio, lot of material is, but one thing I want to tell you, always recommend your student that they should go either to the institutional, to the government, and to the validated and authenticated kind of sources also. Do not allow them to use unauthenticated and invalidated kind of materials. Reason being, the material may be the wrong or fake, unauthentic, right? University, educational institutions, government websites, other authenticated kind of websites, though those sources can be used. So first you check it, which kind of material is being taken by the student, right? Then next is hybrid. Nowadays, yes, lot many study can be possible through MOOCs program, और free के MOOCs हैं बहुत सारे, एक एक का जरूर अनुभव करा देना अपने बच्चों को। Then illustration, graphic, you can use learning object repository, then online courses, online course module, open journal, open textbooks, photographic images. मेरे पास टाइम नहीं था, ये रात को ही मैंने बनाया। I could sleep at 12
अदरवाइज मेरा मन था कि मैं इसमें कुछ डाल के लाता आपके लिए। प्रेजेंटेशन, क्विजेस, 5 मिनट लगती है, 10 क्वेश्चन लिख ले जाओ, नेट से ही मिल जाएंगे, कुछ नहीं लगता। थोड़ा टेक्नो से भी तो आपको होना पड़ेगा, राइट। देन रेफरेंस मटेरियल, सिमुलेशन, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जरूर, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करो, उनके ग्रुप बनाओ, उस पर आप छोड़ो, कुछ क्विज छोड़ो, काम दो, राइट। सिलेबस, देन ट्यूटोरियल्स, video, lot many videos specifically related to your subjects, and the videos which are being recorded by UPSC preparators, बहुत अच्छी वीडियोस होती है हर सब्जेक्ट की। NCERT से स्टार्ट होती है आपकी प्रिपरेशन, अगर उनकी वीडियोस यूज करेंगे तो बहुत अच्छी, राइट। वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग मटेरियल, एंड बाय द वे 56। Any doubt, any comment, anything you want to ask, most welcome. Should I close the session? Yes. Because it is online, na? So I think I should close it. Thank you, ji. Thank you very much. Thank you. Zoom meeting is Coming up. we'll कर दी सबने।